So this is Indian Polity series presented by me Rahul Das, and this lecture is about amendment of the Constitution. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे किसी भी लेक्चर की पीपीटी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ईमेल को पोस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपने लेक्चर्स की पीपीटी आपको मेल कर दूंगा। चलिए आज की लेक्चर शुरू करते हैं। सो Amendment of the Constitution. These are the contents. These are the topics which we will cover in this lecture. The first thing is introduction. The second thing is procedure for amendment. What are the different process of amendment? And number three is types of amendment. Amendment की कितने types होते हैं? So basically there are three ways in which amendment can be done. Which has been prescribed in our constitution. Number A, by simple majority. Number B, by special majority of parliament. And number C, by special majority of parliament and consent of states. So these are the three types of amendment. So let us start our discussion from the first topic, which is introduction. So amendment, what does this mean? Amendment का मतलब क्या होता है? It means a minor change or addition designed to improve a text, piece of legislation, etc. So amendment means change or addition or modification which has been designed to improve a text, किसी भी text को improve करने के लिए या फिर एक legislation को improve करने के लिए, legislation को modify करने के लिए का जो process होता है उसे हम amendment बोलते हैं। Now why is it necessary? ये क्यों ज़रूरी है? It is necessary so that provisions of the constitution adjust itself to the changing conditions and needs. So ये बहुत ज़रूरी है amendment ताकि जितने भी constitution के provisions हैं उनको हम adjust कर सकें changing conditions और needs के accordingly. Then Article 368 in Part 20 of the Constitution deals with the powers of Parliament to amend the Constitution and its procedure. So this is the provision of amendment, Article 368, and it has been given in Part 20 of the Constitution. और ये article Parliament को ये power देता है कि वो Constitution को amend कर सकती है. Then the Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the Constitution. So this basic structure thing is very important. इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने किसी भी लेक्चर में. So basic structure of the constitution, this was ruled by the Supreme Court in the Keshav Nanda Bharti case 1973. तो पार्लियामेंट के पास पावर तो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, बट पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड दोज प्रोविजंस व्हिच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं कुछ उन्हें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है. एंड दिस वाज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशव नंदा भारती केस 1973. नाउ coming to our next topic, which is procedure for amendment. This is very important. So what is the process of amendment? Amendment का क्या process है? Now the process is laid down in Article 368 and is follows. So ये article आप जरूर याद रखिए. Amendment की जो process है वो Article 368 में उसके सारे provisions दिए गए हैं. Now the first thing is an amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament and not in the state legislatures. So अगर हमें constitution को amend करना है तो हमें एक bill introduce करना पड़ेगा. पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में हम बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो. बट ये जो बिल है हम इसे स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Now the second step is the bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the president. So bill जो है वो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर कोई भी एक प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिनिस्टर एंड अ प्राइवेट मेंबर?
all the members of parliament who are not ministers are private members. Okay, so all the members of the parliament who are not ministers are called private members. So ministers भी introduce कर सकते हैं बिल को और private members भी बिल को introduce कर सकते हैं, और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की जरूरत भी नहीं होती. Then the third thing is the bill must be passed in each house by a special majority, that is a majority that is more than 50% of the total membership of the house and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting. So ये जो बिल है जब हम इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ेगा ईच हाउस में. लोकसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा और राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा. व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी इज अ मेजॉरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. सो एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. सो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. समझ जाइए, फॉर एग्जाम्पल कि देयर आर 400 मेंबर्स इन a house. So special majority says that majority that is more than 50%. So what is the 50% of 400? 50% of 400 is 200 members. So first of all, the bill should be supported by 200 members. 200 members of the house, which is the total 50% of the total membership of the house. Then a majority of 2/3 of the members of the house present and voting. फिर जिस दिन इस बिल पे वोटिंग हो रही है, इसे पास कराने के लिए वोटिंग हो रही है, उस दिन या फिर उस वक्त जितने भी लोग उस हाउस में प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 मेंबर इस बिल को सपोर्ट करने चाहिए, तभी जाकर ये जो अमेंडमेंट की बिल है वो पास हो पाएगी. So this is called special majority. Then each house must pass the bill separately. और ये जो बिल है ये दोनों हाउस में सेपरेटली पास करना पड़ेगा. लोकसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा. Process will be same. And in case of disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of deliberation and passage of the bill. So अगर दोनों हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, एक हाउस बोलता है कि मैं बिल को पास कर रहा हूँ, दूसरा हाउस बोलता है मैं बिल को पास नहीं करूँगा, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जॉइंट सिटिंग हो जाए दोनों हाउसेस की इस बिल को पास करवाने के लिए. ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये आप याद रखिए. ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता है कि जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है ताकि उस ऑर्डिनरी बिल को पास किया जा सके, बट अमेंडमेंट करने का जो बिल है उसे जॉइंट सिटिंग के थ्रू पास नहीं किया जा सकता. Then the next stage is if the bill seeks to amend the federal provisions of the constitution, it must also be ratified by the legislatures of half of the states by a simple majority, that is a majority of the members of the house present and voting. So अगर वो अमेंडमेंट की बिल जो है वो फेडरल प्रोविजंस को अगर अमेंड करना चाह रही है, फेडरल प्रोविजंस मतलब प्रोविजंस व्हिच आर रिलेटेड टू स्टेट्स आल्सो, देन इट मस्ट आल्सो बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. सो अगर इस अमेंडमेंट की बिल से स्टेट्स अगर अफेक्ट होते हैं, फेडरल प्रोविजंस अगर अफेक्ट होता है, तो उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनकी हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रैटिफाई द बिल बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. Then after duly passed by both houses of the parliament and ratified by the state legislatures, where necessary, the bill is presented to the president for assent. और जब दोनों पार्लियामेंट की दोनों हाउस में ये बिल पास हो जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी इसे पास कर देती है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी इसे पास कर देती है, तो इस बिल को फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए. Then the president must give his assent to the bill
प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए, ही मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ही कैन नीदर विथ होल्ड हिज एसेंट नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सो अमेंडमेंट की जो बिल है उसके लिए प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। ही कैन नीदर विथ होल्ड हिज एसेंट, वो अपने एसेंट को विथ होल्ड नहीं कर सकता, यानी ऐसा वो नहीं बोल सकता कि मैं बाद में अभी नहीं, मैं एसेंट दूंगा अपना, बाद में दूंगा। he cannot withhold his assent nor return the bill for reconsideration of the parliament, और पार्लियामेंट के पास इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेजा जा सकता है। सो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल एंड आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट, और प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सो दीज आर द procedure for amendment. I think I hope you understood the process. Then our next topic is types of amendment. So the constitution can be amended in three ways. तो तीन तरीके से हम अपने constitution को amend कर सकते हैं. Number one, by simple majority. Number two, by special majority of parliament. And number three, by special majority of parliament and consent of states. So then coming to our first type of amendment, which is by simple majority of parliament. Now, simple majority means a majority of the members of the house present and voting. So simple majority means a majority of the members of the house present and voting. So simple majority का मतलब होता है वो majority of the members of the house present and voting, जो house में जितने भी members present हैं, और फॉर एग्जांपल अगर हाउस में 200 मेंबर्स प्रेजेंट है और 200 मेंबर्स में से अगर हम 101 मेंबर्स ने उस बिल को पे वोट किया और सपोर्ट किया उस बिल को, देन द बिल फॉर द अमेंडमेंट विल बी पास्ड. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंपल majority. Now this amendment is outside the scope of Article 368. ये amendment जो है वो आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर है, यानी इसे आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं रखा गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये बहुत बार प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन में आया है कि क्या सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 के अंडर में आती है या नहीं. So आर्टिकल 368 doesn't provide for simple majority of parliament, amendment through simple majority of parliament. And some important provisions which can be amended in this way are, कुछ important provisions जो जिन्हें इस amendment के accordingly amend किया जा सकता है are admission और establishment of new states. So admission और establishment of new states, किसी भी new state को admit करना है country में या फिर किसी भी new state को establish करना है तो उससे सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. किसी भी न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन या फिर उसके एरिया को अल्टर करना है, फिर उसके बाउंड्री को अल्टर करना है, फिर उसके नेम को चेंज करना है, इसे भी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड किया जा सकता है. देन एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स. स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना, खत्म करना या फिर क्रिएट करना. दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. देन सिटीजनशिप के जितने भी प्रोविजंस है उसे भी सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड किया जा सकता है. इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड provisions of 5th schedule and 6th schedule. So these are some of the provisions which can be amended by by simple majority of parliament. Then our second type of amendment is by special majority of parliament. What is the meaning of special majority of parliament? Special majority means a majority that is more than 50% of the total membership of each house and a majority of 2/3 of the members of each house present and voting. So special majority का मतलब है total membership का more than 50% plus 2/3 of the members of each house present and voting. जितने भी लोग वोटिंग के समय प्रेजेंट है उसमें से 2/3 members उस बिल को सपोर्ट करने चाहिए. Then this amendment comes under the scope of Article 368. Obviously, ये amendment Article 368 के scope के अंदर में है. And the provisions which can be amended by this way includes fundamental rights. Fundamental rights को अगर amend करना है तो special majority के through.
अमेंड करना पड़ेगा. Then directive principles of state policy and all other provisions which are covered by all other provisions which are not covered by yoga, which are not covered by first and third categories. First and third categories मतलब by simple majority and by special majority of parliament and consent of states. So first और third categories के accordingly जिस भी provisions को amend नहीं किया जा सकता उस provision को by special majority of parliament के through amend किया जा सकता है. And the last type of amendment is by special majority of parliament and consent of states. Now those provisions of the constitution which are related to the federal structure of the polity can be amended by a special majority of the parliament and also with the consent of half of the states. So वो provisions जो constitution के federal structure से related है, state से related है, उन provisions को अगर amend करना है then special majority तो चाहिए ही, साथ ही साथ half of the states की consent भी चाहिए. Then there is no time limit within which the states should give their consent to the bill. जैसा कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है जिसके अंदर में स्टेट्स को कंसेंट अपना देना है उस बिल के लिए. Then the following provisions can be amended in this way. Elections of president and its manner, then extent of the executive power of the union and the states, then distribution of legislative powers between the union and the states, representation of states in parliament, and power of parliament to amend the constitution and its procedure. Article 368 itself. So article 368 itself, अगर article 368 को अगर amend करना है तो भी special majority of parliament and consent of the states की जरूरत पड़ेगी. So this was amendment of the constitution. Thank you for listening to the lecture. Thank you.